Now, going forward with our option videos, earlier we covered protective put, a simple technique to hedge in case you feel that the market is going to come down or your stock portfolio is going to erode. You can purchase put options. There's another way of hedging. Now, this is not completely hedging per se, it's like a quasi hedging. It's more like generating steady pocket money. And the strategy is called कवर्ड कॉल। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास पोर्टफोलियो है, आपके पास वो अंडरलाइंग स्टॉक है और वो स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड हो रहा है और उसी स्टॉक का आउट ऑफ द मनी कॉल्स आप बेचते हो। नाउ दिस एक्सरसाइज, दिस स्ट्रैटेजी मार्जिनली कुछ हद तक हेज का काम करता है, बट द मेन ऑब्जेक्टिव of this strategy is not hedging. The main intention, objective of this concept of covered call is to generate pocket money, kind of small amounts, considering that I'm not going to sell my underlying stock. तो चलिए पे ऑफ डायग्राम्स ड्रॉ करके समझते हैं what should be the ideal payoff of a covered call. ओके, सो पहले की तरह इस वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी तीन डायग्राम्स ड्रॉ करके रखे हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक, जो स्टॉक आप खरीद के बैठे हो, इट्स देयर इन योर पोर्टफोलियो। और सेकेंड पे ऑफ डायग्राम इज दैट ऑफ शॉर्ट कॉल, एंड द नेट, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो नेट होगा कवर्ड कॉल। अलाउ मी स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज लॉन्ग स्टॉक। अब लॉन्ग स्टॉक इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। लेट्स से आपने एक स्टॉक खरीदा 1,000 रुपए पे, 1,000 रुपए पे ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट, ये रहा हमारा प्रॉफिट क्वाड्रेंट, और अगर 1,000 के नीचे जाता है तो ये हो गया आपका लॉस। सो इट्स अ लीनियर स्ट्रेट लाइन, अ लॉन्ग स्टॉक। यू डोंट नीड टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड लॉन्ग स्टॉक। अब सोचिए आपके पास ये स्टॉक है, आपने 1,000 में खरीदा है और आपने 1,100 रुपए स्ट्राइक प्राइस, 100 रुपए ऊपर आप इसका कॉल बेच देते हो। नाउ व्हेन यू आर सेलिंग द कॉल, आपको प्रीमियम मिलता है और इसके साथ यू गेट द ऑब्लिगेशन, यू डोंट हैव एनी राइट। सामने वाला कॉल खरीद रहा है, he has the right to buy, you have the obligation to sell. So 30 रुपए लेके आपके पास ऑब्लिगेशन है, you have the obligation, you've earned 30 rupees to sell it at 1100 if the counterparty asks you to do so. Now let's add them up and understand what will be the payoff diagram of the covered call. The best way to understand this is with some levels. So over here on the right hand side, what I have done is 1,000 पे क्या होगा? 1,000 पे आपने स्टॉक खरीदा था 1,000 पे, सो आपका स्टॉक आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं देगा, इट विल बी जीरो। कॉल से आपने 30 रुपए कमाया है। लेट्स अंडरस्टैंड, एट 1,000 रुपीज द काउंटर पार्टी हैज बॉट द कॉल ऑप्शन फ्रॉम यू एंड ही हैज पेड 30 रुपीज, मीन्स he has the right to buy at 1100, but the market is at 1,000. Will he exercise? जब बाजार में सस्ते में मिल रहा है, वो क्यों 1,100 रुपए में खरीदने जाएगा? सो सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा, आपका 30 रुपए पॉकेट में रह जाएगा, सो योर नेट प्रॉफिट इज 30। अगर ये सोचिए 70-80 रुपए ऊपर जाता है, लेट्स से 1,080, 1,000 में खरीदा था, स्टॉक में 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सेम लॉजिक, जब बाजार में 1,080 का मिल रहा है, सामने वाला 1,100 में नहीं खरीदने वाला है, सो स्टिल आपके पॉकेट में 30 रुपए रह जाएगा। 80 प्लस 30, 110, सो यू आर गेटिंग मोर प्रॉफिट्स। अगर आप सिर्फ स्टॉक को होल्ड करते, इफ यू हैड जस्ट ओनली हैड द स्टॉक, यू वुड हैव मेड 80, but now you're getting some extra. So net is 110. Now what happens at the strike price? At the strike price, which is at 1100, you make 100 rupee from your stock holding, that is 1100 minus 1000, but your call you still make 30 because the counterparty has a right to exercise at 1100. The market is at 1100, so it will expire with no value and you will keep your 30 rupees in your pocket and 130 becomes your profit. Now the important thing is this 130 is your max profit. इसके ऊपर मतलब 1100 के ऊपर 1150, 1200, 1300, 1400, इनफैक्ट मैंने 1500 का एक एग्जांपल लिया कि 1100 के ऊपर जब भी जाएगा 130 के ऊपर प्रॉफिट आपका कभी होगा ही नहीं। Now over here I've purposely taken a significantly larger number than your buy price of 1,000. It's 1,500. Now at 1,500, of course your stock is giving you 500 rupees, 500 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक से। लेकिन 1,500 में आपका कॉल ऑप्शन का क्या हाल है? यू हैव द ऑब्लिगेशन टू सेल टू योर काउंटर पार्टी एट 1100, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आपको 400 रुपए का लॉस, लेकिन आपको 30 रुपए का प्रीमियम मिला है। सो दिस 400 रुपी लॉस
is counterbalanced by that small 30 rupees premium. So your net is 370 loss, so it's 130. You can check after 1100, even if it's 1150, 12, 1250, 1350, and if it keeps on going up, 130 ke upar, your profit will never exceed 130. So your upside is capped out of this covered call. And then what is your break even? Break even is very simple. It's 970. मतलब आपके 1000 का buy price से 30 rupees less, because with the stock you're losing 30 rupees, you've already pocketed 30 rupees, so net is zero. And that's how आपका covered call का payoff diagram takes the shape like this. This is essentially the shape of when you sell a put. This is your strike price. At the strike price and beyond the strike price, your net profit is always 130. So this is capped. Between 970 and 1100, it will fall your profits, and sub 970, at 970, it's zero. And sub 970, if the stock price falls, you go into the loss. So ye raha the simple approach towards covered call with a very simple example. I hope you've understood. Please understand, covered call ka jo main objective and intention hota hai, that is, I have the stocks in my portfolio which I will continue to hold. Make sure that they are good quality stocks, preferably out of the top 50 to 100 stocks which are traded in the derivative segment. And you occasionally sell the calls so that you pocket the premium. So the ideal situation when someone will do the covered call is जब आपको लगता है that the uptrend is pretty steady, and अगर your chart analysis or your market analysis आपको बताता है कि कोई big fall correction होने वाला नहीं है, the fundamentals of the stock is very steady and the stock price is also very steady in an uptrend, that's an ideal situation जहाँ पे एक trader, एक investor covered call exercise कर सकता है. So that's covered call for you. Do let me know, share your thoughts about this simple strategy. How are you doing it, if you're doing it at all? And do share your thoughts, your suggestions, and feedback. We'll definitely get back to you. Till then, take care of yourselves and trade well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.